बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर रोटेशनल मोशन एंड इट इज़ रिलेटेड टू द रोटेशनल काइनेटिक्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम स्टडी कर सकते हैं उस कंसर्न को जो बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करता है। मीन टू से वी आर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट फोर्सेस व्हिच कैन प्रोड्यूस रोटेशन, और इसको हम टॉर्क टॉर्क कहते हैं, और हम इसे रोटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो इस तरह की जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं हम उसको आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आज के लेक्चर के हवाले से है वो ये है कि जिस तरह व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्सेस ऑन द बॉडीज, देन द बॉडीज आल्सो रेजिस्ट। तो हर कोई बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करने के लिए कोशिश करता है। तो इसकी बुनियादी वजह देयर इज समथिंग, जिस तरह आपने रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर इनर्शिया पढ़ा था, इन द सेम वे वी हैव हियर रोटेशनल इनर्शिया, जो कि बॉडी को रोटेट करने से या फिर रोटेटिंग बॉडी को स्लो डाउन या स्टॉप करने के लिए रेजिस्ट करता है। तो आज का लेक्चर जो होगा उन सारी बातों के ऊपर भी मुश्तमिल होगा। So this lecture is related to our course Mechanics 1 PHY 301 BS Food Science and Technology, third semester morning, fall 2021 है। And in the last lectures we have discussed about number of terminologies and number of you can say the concepts about the rotational motion. So the last lecture were purely about the angular position and their relation between the radian, angular displacement, angular velocity, angular acceleration, rotational motion, and the constant acceleration. So in the same way, we have discussed about rotational motion part 2. This provides the relation between the angular and linear physical quantities, rotation, kinematics and equations of motion. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें डिस्कस की थी। So in this lecture, we are going to discuss about the rotational kinetics part 1, in which we will discuss about first of all what is called the turning effect क्या होता है. We will discuss about the turning effect. Then we will discuss about the rotational inertia of the body. इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आज के लेक्चर में बात करेंगे. So, what is rotational kinetics? So we have here the study of the rotating bodies, which concern about the cause of the rotation is known as rotational. We concern about the rotational kinetics. This is the kinetics, and it is called the kinetics. So this is it is called the kinetics of the body. So you can see here that we can also suggest ऐसी जिसके अंदर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, जिसके अंदर आपका जो कंसर्न हो दैट आर द फोर्सेस, रोटेटिंग फोर्सेस हो, हम उसे रोटेशनल काइनेटिक्स कहते हैं. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग फोर्स? तो आप देख सकते हैं कि इस जीआईएफ के अंदर आप देख सकते हैं कि whenever we apply the force on the wrench, then bolt nut is rotating here. So this particular force is basically providing the rotation here. So such type of the forces are called rotating forces. So actually this is basically the torque that is applied here, and this rod length is basically known as the moment arm of the force of the body, and this point of application of the force is basic can be changed from this position to this position, and we can also change the rotational motion of the body as well. So इस तरह की जितनी फोर्सेस जो बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करवा देती हैं, we it is called the torque. So we have the same definition here as the force which produces the turning effect in the body is called the torque, and dependency of the torque. तो ऐसी जितनी फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी के ऊपर जब अप्लाई होती हैं तो इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करें, हम उसे टॉर्क कहेंगे. और डिपेंडेंसी ऑफ टॉर्क टॉर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो दैट इज़ वेरी सिंपल वे यू कैन सी हियर कि आपके पास एक रैंच है, और ये रैंच जो है इसकी इस एनिमेशन के अंदर दिखाया गया है कि वी हैव डिफरेंट सिचुएशंस है, एज यू कैन सी हियर. जैसे ही आपके पास ये बॉडी जो है वो चेंज हो रहा है, तो ऑल द फैक्टर्स कैन बी चेंज एंड द टॉर्क कैन बी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज.
तो ये मैग्नीट्यूड दिखाई गई है जिसके अंदर है कि टर्निंग इफेक्ट जो है बराबर है एफ परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डी। इफ यू इंक्रीजिंग द डी देन द फोर्स आर स्मॉलर। तो इसका मतलब अगर आपकी फोर्स बढ़ रही है तो आपका डी श्रिंक होता है तो फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। सो दीज थिंग्स आर वाइस वर्सा। तो आप इस सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं अपने सामने कि स्क्रीन के ऊपर कि जो टॉ है दैट रिप्रेजेंट्स द टॉर्क। तो दिस इज द टॉर्क है और ये जो फोर्स है आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रही है अप्लाइड फोर्स। और ये फोर्स जो है ये डिपेंड करती है इसके मोमेंट आर्म के अंदर। तो दिस इज द मोमेंट आर्म। as you can see here, this is the length of the moment arm. If we have longer length of the moment arm, that will be the shorter force. If we have shorter moment arm, then we have to apply the longer force here, a bigger force here. So in the meanwhile we have also talks depends upon the एज वेल एज द मूवमेंट आर्म की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है एज वेल एज ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। सो एज वी कैन सी है द डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस द टॉर्क जो है वो थीटा पे डिपेंड कर सकता है एंड थीटा इज बेसिकली रिलेट्स द टॉर्क एज द टॉ इज इक्वल टू यू कैन से है जैसे कि बॉडी में दिखाया गया है इट कैन बी रिप्लेस्ड एज आर क्रॉस एफ है। So this is basically the cross product of R and S. So tau is basically the cross product। और अगर आप इसको ओपन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को तो आपने पढ़ा भी था कि tau will be equal to RF sin theta sin theta into any unit vector। So we have here the values as tau is equal to RF sin theta और उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इस मीन दैट अगर आपके पास थीटा जो है वो ज़ीरो है तो टॉर्क ज़ीरो होगा, अगर थीटा 90 है तो मैक्सिमम होगा। तो अगर इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे ही अब हम इस हैंड को यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो ये जैसे-जैसे फोर्स है वो वेरी हो रही है वैसे-वैसे आपके पास क्या है जो टॉर्क है वो चेंज हो रहा है और ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये 0 90 डिग्री है यहाँ से हैंड के साथ। जैसे आप 90 डिग्री से अवे जाते जाते हैं 180 डिग्री की तरफ तो यू गॉट द सेम वैल्यू ऑफ फिर कि यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो टॉर्क हो जाता है। सो नो टॉर्क जब आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में अमल करती है तो नो टॉर्क है। जब आपकी फोर्स परपेंडिकुलर वर्क कर रही है तो एट दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। और इस दौरानिए के अंदर आपकी जो फोर्स है वो कम हो रही है विद मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से आप इसको एंगुलर फॉर्म के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। In the same way, we also have another important factor जो कि इस रोटेशन के अंदर हम फील करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज द रोटेशनल इनर्शिया। सो व्हाट इज बेसिकली द रोटेशनल इनर्शिया? रोटेशनल इनर्शिया जनरली तौर पे ये फार्मूला बनाया जाता है आई इज इक्वल टू आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और लिखा जाता है समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। तो this expression is basically give you a general way to treat the things, but this is not the you can say that the whole formula of the system। so ये हर एक शेप के ऊपर और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। so I is the rotational analogy of the inertial mass। जैसा कि आपके पास m होता है तो जैसे आप m लिखते थे वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे हम I लिखते हैं और उसके मुताबिक ही हम ये सारी चीज़ों और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। फॉर रोटेशनल मोशन इट्स नॉट जस्ट द वैल्यू ऑफ एम बट हाउ फॉर इट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास कि जो आई है एक्चुअली तौर पे ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा एंड सेकेंडली द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। सो इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इस पे डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एंड एज वेल एज ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। जबकि दिस इनर्शिया इज बेसिकली जिसे हम लीनियर इनर्शिया कहते थे इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास। तो ये सिर्फ मास पे डिपेंड करता था। सो द इफेक्ट ऑफ ईच मास एलिमेंट इज वेटेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका जो है हर इफेक्ट है वो उसके स्क्वायर ऑफ द
मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिया जाता है। एंड एंड इट इज़ वेरी क्लियर दैट एज यू कैन सी हियर कि आपके पास फर्दर फार्दर फर्दर फ्रॉम द एक्सिस द ग्रेटर इज इट्स इफेक्ट। तो ये है कि जितना आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होंगे उतना इनर्शिया जो है वो बढ़ता जाएगा। सो रोटेशनल इनर्शिया जो है उसको समझने के लिए आइए देखें समझते हैं कि ये हम किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया को। सो द रोटेशनल इनर्शिया जो है दैट इज बेसिकली कैन बी अंडरस्टैंड बाय दिस वे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो एक थिन रॉड जो कि मासलेस वेटलेस रॉड है उसके साथ इसको हमने जॉइन कर दिया है जिसका मास के सेंटर ऑफ मास से लेके एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है r। and now we want to rotate the body along this axis है। so और आप इस बॉडी को यूं रोटेट करना चाहते हैं। सो इन दिस वे वी वांट टू रोटेट द सिस्टम। सो अगर आप इस बॉडी को रोटेट करना चाहते हैं इन दिस वे, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। सो बॉडी जो है अपने ही एक्सिस के थ्रू घूमना चाहती है। सो दिस विल बी द आर है। सो इन दिस वे द मास on the end of the weightless rod length r can be taken as in this I is equal to MIRI square and then this I is equal to I is equal to MR square हो जाएगा। So in this way you got the formula of rotational inertia like this I is equal to MR square। So if we have a double situation है just like कि अगर आपके पास जो है वो दो मैसेज हैं और उन दोनों का मैस m/2 है। तो दो मैसेज जो है वो उन सबका जो रॉड से जो डिस्टेंस होगा वो डबल आर कर ले बेशक दैट इज हाफ ये भी हाफ ऑफ आर है। और अब आप इनको अगेन उसी तरह से घुमाना चाहते हैं जिस तरह पहले आप घुमा रहे थे। सो दे आर यू आर गोइंग टू रोटेट द बॉडीज। सो इन दिस वे you will get the formula I is equal to MIRI square। So we have the formula like this half of mass so that is 1 by 2 mr square plus 1 by 2 mr square। so we got the formula mr square। तो इस तरह से आपके पास ये जो वैल्यू है फाइंड आउट की जा सकती है एज द सेम एज द एंड ऑफ द रॉड। they have the same expression for this one। In the same way we can also find out the rotational inertia for the case of cylindrical structure। So we have a hollow cylinder here, you can see here it should be, if the length of the cylinder is very short then it could be a hoop type situation। तो अगर ये रॉड के एक्सिस में से ये एक एक्सिस पास हो रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से सिलेंडर की जो वॉल है उस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। सो वी हैव एम इज इन द रिंग ऑफ द रेडियस आर। सो वी गॉट दी अगर आपके पास जो सिलेंडर है वो अपने ही एक्सिस के लिए घूमता है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द सेम सिनेरियो about the value of the mass I is equal to mr ir square। so we have here summation mir square। so we got the formula again mr square है because यहाँ से R तक का distance सबके लिए same है but we have many particles then sum of all the particles will be equal to the mass of the cylinder। the total moment of inertia can be taken as I is equal to mr square। so this is again the same formula as we have for the case of dumbbell shape। so if we notice that then the situation is very you can say that very easy to understand that every shape and axis of rotation can be used to change the rotational inertia of the system। So you can see here this is the hoop about center of axis। तो अगर आपके पास कोई hoop है और वो अपने ही center of axis के गिर्द घूम रहा है तो इसकी जो वैल्यू है that is I is equal to mr square है। तो अगर ये B है तो ये एक एनुलर सिलेंडर और ये सिस्टम है जिसके अंदर उसकी थिकनेस ऐड हो जाती है। तो वी गॉट द फॉर्मूला 1/2 mr r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर है। सो अगर आपके पास कोई सॉलिड सिलेंडर है तो उसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपका सॉलिड ऑफ सिलेंडर अपने ही एक्सिस डायमीटर के गिर्द घूमता है तो दिस विल बी द सिचुएशन इन विच 1/4 mr स्क्वायर प्लस 1/12 ml स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपका जो है thin rod about axis through the center of perpendicular to the length हो तो ये I is equal to 1/12 ml square हो जाएगा।
सो अगर सफियर हो तो कोई दैट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू 2/5 mr² हो जाएगा। इन द सेम वे अगर थिन स्फेरिकल शेल है तो ये आपके पास जो है वैल्यू आई इज इक्वल टू 2/3 mr²। इसी तरह हुप होगा तो 1/2 mr² हो जाएगा। एंड ये डायमीटर के क्रॉस इसकी रोटेशन है। सो इन दिस वे इफ वी हैव अ स्लैब देन वी हैव द वैल्यू 1/12 m इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो इस तरह से इसकी रोटेशन जो है रोटेशन इनर्शिया कंप्यूट किया जा सकता है इन सारी चीज़ों के। सो यू हैव टू नो अबाउट दीज फार्मूलाज एंड हाउ द शेप डिपेंड्स अपॉन द हाउ द रोटेशन इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द शेप्स आल्सो। So you have to अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि आप देख सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली तौर पे जो शेप चेंज हो रही है एक्चुअली ये किसी भी बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चेंज होती है। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि सॉलिड रॉड हो या रोलर सिलेंडर हो, सो देर इज अ मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस एज वेल एज हो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है but इसके बावजूद जो है they have different rotation inertia. So keep in mind that rotation inertia depends upon two factors: mass distribution and axis of rotation. So inshallah we will discuss about next lecture about the rotational kinetics, and in that particular lecture we will discuss about the all the factors on which the rotational effects depends upon that, and equations of motion एंड लॉज ऑफ रोटेशन से इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसे हम रोटेशनल काइनेटिक्स पार्ट 2 के अंदर ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और आंसर सेशन देन यू कैन आल्सो डिस्कस योर आइडियाज, यू कैन डिस्कस योर कन्फ्यूजन। और आप किसी भी किस्म की जो कन्फ्यूजन है क्वेश्चंस हैं उनको हमारे इंटरेक्टिव सेक्शन के अंदर जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।